Hello guys, welcome back to our channel. So in today's video we are going to discuss the most important question for MPSC 003 India Democracy and Development for term and exams. So मैंने बहुत सारे questions इसमें include किए हैं, almost 100 questions हैं. अगर आप ये करके जाओगे तो आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे से नंबर आ जाएंगे और आप इजीली पास भी कर लोगे. और आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन डेमोक्रेसी. Second is the process of political democracy and economic development in India during 1967 to 1990. Third, what role does social inequality play in a political system? Fourth, the correlation between the political participation and political parties in India. Fifth, poverty elevation measure in India. Sixth, new social movement. Let's move to the next slide. हमारी सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं अब हमारा क्या है. आप ये क्वेश्चंस को ना पॉज करके लिख लेना. सेवन्थ क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया. एट्थ, द लिंकेज बिटवीन माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन. नाइन्थ, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया बिफोर 1991. देन टेंथ, सस्टेनेटिव डेमोक्रेसी. 11th, एवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस पॉलिटिक्स. 12th, लिबरलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी. 13, व्हाट एफर्ट्स आर नीडेड फॉर इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल ऑफ इंडिया. 14, why has India been described as the union of state? Describe the implication of the use of the term. Now 15th है, how has the new economic policy affected the working class and its movement? 16th, the role of new social movement in the empowerment of marginalized section and communities of the society. 17th, poverty and poverty line. 18th, public interest litigation. 19th, cause of migration from rural to urban areas and its implication for the cities. Next is 20, how can agencies of development contribute toward bringing women out in the productive areas? Explain. 21, market economy and its advantages and disadvantage in the process of development. यहाँ पे disadvantages है एक. 22, evolution of religious politics in pre and post independent India. 23, critically examine the current debate on relationship between the democracy and development. 24, role of media in Indian democracy. 25, changing role of bureaucracy in India. 26, impact of liberalization on democracy in India. Next है 27 है हमारा, एक सेकेंड स्लाइड आने दो. 27, religious politics in India. 28, authenticity, various approaches to study it. 29, the process of political transformation in India during 1947 to 1967. 30, relationship between migration and development. 31, reason for the growth of regionalism in India. 32, discuss the nature and importance of fundamental rights and directive principle of state policy as instrument for social economic justice in India. 33, describe and assess the distinctive features of the administrative framework of India. 34, critically evaluate the process of political democracy and economic development taking place in India since 1990s. 35, why is judiciary been considered as the most effective organ for safeguarding the rights and interests of citizen? Elaborate. 36 की बात करें जाए तो हाउ कैन डेवलपमेंट ब्रिंग आउट अ पॉजिटिव चेंज इन द स्टेटस ऑफ वुमेन? एक्सप्लेन. 37, एनालाइज रीजनलाइजेशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स एंड इट्स इम्प्लीमेशन फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज. 38, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हाउ कैन इट दिस बी अचीव्ड? 39, असेस द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग एज अडॉप्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया. 40, डिस्क्राइब एंड असेस द नेचर ऑफ एथनिक मूवमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट. 41 की बात की जाए तो critically analyze the main points in the debate on the model of development in India. How has India fared in poverty alleviation? How can the condition of people in India improve? Explain. 43, write an essay on the working of the Indian federal system. 44, discuss the cause of rise of regionalism in India. 45, analyze the manifestation of authenticity in India. How can the Indian state cope up with the challenge of authenticity? 46,
46 की बात करी जाए, एनालाइज द नेचर ऑफ क्लास इन इक्वालिटी इन इंडिया. 47 डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑन ग्रास रूट डेमोक्रेसी. 48 इवेलुएट द नेचर ऑफ पीस इन मूवमेंट इन इंडिया. 49 explain the indicator of human development. 50 compare the feature of procedural and sustainative democracy. 51 discuss the significance of fundamental rights and directive principle of state policy as instrument of social change. 52 how does social inequality affect the development policies of Indian state. Discuss. 53 explain and evaluate the changing nature of local self government after implementation of 73rd and 74 constitutional amendment. 54 write an essay on the role and the performance of parliament in India. 55 explain the role of judiciary in safeguarding the rights and interest of the citizens. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए 56 की, तो वो है हाउ हैज़ द कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया. एक्सप्लेन. 57 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स. एक्सप्लेन. 58 डिस्क्राइब एंड इवेलुएट द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक ओपिनियन. 59 राइट ए नोट ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड डेवलपमेंट. 60 व्हाट इज लिबरलाइजेशन. एनालिसिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस. नेक्स्ट हमारा है 61 क्वेश्चन. व्हाट वाज द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट. 62 नरेट द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया सिंस 1991. 63 एक्सप्लेन द रोल ऑफ राज्यसभा इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम. 64 डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म. 65 राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीस इन मूवमेंट इन इंडिया एंड द रोल ऑफ प्रेस इन इंडियन डेमोक्रेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 जो कि है राइट एन एसे ऑन द अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट. 67 व्हाट आर द डिफरेंट थोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ रीजनिज्म इन इंडिया. 68 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 69 डिस्कस द मैनिफेस्टेशन ऑफ एथेंटिसिटी इन इंडिया with suitable example. 70 राइट शॉर्ट ऑन द प्रोसीजरल डेमोक्रेसी एंड जेंडर डेवलपमेंट एंड जस्टिस. 71 की बात की जाए एक्सप्लेन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एज गाइडलाइंस टू द स्टेट टू ब्रिंग अबाउट सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. 72 डिस्कस द नोशन ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी विद रेफरेंस टू कास्ट हायरार्की इन इंडिया. 73 व्हाट इज पार्लियामेंट्री सोवेरिटी. इज इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. 74 critically examine judicial activism in India. 75 what are the major provisions of the 73rd and 74 constitutional amendment with regard to panchayati raj system. नेक्स्ट 76 है हमारा वो डिस्कस द वेरियस फार्मर मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया. 77 हाउ आर द पॉलिटिकल पार्टीज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट ग्रुप. 78 डिस्कस द रिलेशन बिटवीन द जेंडर एंड द डेवलपमेंट. 79 व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 80 राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस एंड LPG पैकेज इन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स. 81 डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन. 82 critically evaluate the role of parliament in India. 83 mass participation has changed the character of political parties in India. Discussed with examples. 84 explain the role of Indian politics in relation with executive and judiciary. 85 write an essay on the distribution of power between the union and the state in India. नेक्स्ट है हमारा 86 एग्जामिन द नेचर सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ वर्किंग क्लास मूवमेंट इन इंडिया. 87 डू यू एग्री विद द ऑब्जर्वेशन दैट इंटरेस्ट ग्रुप हैव्स गेन्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी वाया पॉलिटिकल पार्टीज. गिव रीजन फॉर योर आंसर. 88 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजेंसीज ऑफ डेवलपमेंट. हाउ डू दे कंट्रीब्यूट टू द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन. 89 डिस्क्राइब द ethnic challenges to nation building in India. 90 examine the debates on the nature of Indian democracy with reference to difference between the procedural and sustainative democracy. 91 है हमारा discuss the nature of class inequality in India. 92 analyze political democracy and economic development in India since 1991. 93 how has India fared in poverty alleviation. Comment. 94 what is parliamentary sovereignty. Discuss the issue with reference to India. 95 write short note on the concept of political participation and the 74th amendment to the constitution of India. Next question हमारा 96 है analyze
is the concept of sustainable democracy in India? 95. What are the causes of urbanization and how can this problem be addressed? Discuss. 98. Discuss the evolution of religion politics in India. 99. Discuss the concept of developmental planning in India. Right short note, gender equality and North East India. So guys, ये कुछ क्वेश्चंस हमने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हैं. आप इनको स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके नोटबुक पे लिख लेना और इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना. और साथ ही साथ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो. वो बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ भी नहीं लगेगा. बस आप एक सब्सक्राइब करोगे, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात होती है आपके एक सब्सक्राइब से. तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और पोस्ट नोटिफिकेशन